Hemophilia is a genetic disorder that does not cause a blood clotting. Hemophilia, hemophilia is a genetic disorder that does not causes blood clotting. Blood clotting. Hemophilia is a genetic disorder that does not causes blood clotting. Hemophilia is a genetic disorder that does not causes blood clotting. Hemophilia is a genetic disorder that does not causes blood clotting. In the case of dengue fever, what start to decrease in human body platelets? In case of dengue fever, in case of in case of in case of dengue fever, what starts to decrease in human body platelets platelets in case of dengue fever, in case of dengue fever, what starts to decrease in human body platelets platelets in case of dengue fever, what starts to decrease in human body तो होगा platelets. Okay, in case of hemophilia, what started to be in human body platelets. Okay, hemophilia is a genetic disorder that does not causes blood clotting. Okay, polysaccharide. Which scientist discovered the malaria plasmodium parasite? Sir Ronald Ross. Scientist who discovered malaria plasmodium parasite. Ronald Ross. Scientist who discovered malaria parasite plasmodium discover Ronald Ross. Which radioactive isotopes are used to identify tumors? Arsenic 74. Radioactive isotopes are used to identify tumors को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किया जाता है? तो आर्सेनिक 74. radioactive isotopes
are used to identify tumors. Arsenic 74. Radioactive isotopes isotopes are used to identify tumors. Arsenic 74. Next, which if albumin is coming in the urine, then the kidney is likely to be affected. Yes. Then the kidney is likely to be affected. Polio is a viral disease whose virus enters the body through contaminated food and water. Water can water cause paralysis. Yes. Polio is a viral disease whose virus enters the body through contaminated food and water causes paralysis. Yes. Polio is a viral disease. Polio is a viral disease whose virus enters through contaminated food or water. Contaminated food and water causes paralysis. Polio is a viral disease whose virus enters in the body through contaminated food and water. Food and water causes paralysis. Yes. Next क्या है? Salk vaccine is related to which disease? Polio. Salk vaccine. Yes, Salk vaccine is related to which disease? Polio. Salk vaccine पोलियो के लिए लगता है. Salk vaccine पोलियो के लिए लगता है. Salk vaccine पोलियो के लिए लगता है. Salk vaccine पोलियो के लिए. Yes. The Salk vaccine was invented by Jonas Salk in the year 1952. Salk vaccine invented by Jonas Salk in 1952. Salk vaccine किसके लिए लगता है? तो ये पोलियो के लगता है. पोलियो के लिए लगता है. ओके. और इसको इन्वेंटेड बाय जोनस सॉक इन 1952. और इसमें क्या होता है? ये कैसे होता है? तो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू होता है. ये
कॉन्टा इसका वायरस कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू, फूड एंड वाटर के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर करता है, हमारे बॉडी में एंटर करता है, हमारे बॉडी में एंटर करता है, और जिससे हमें पैरालिसिस हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। और क्या है नेक्स्ट, व्हाट कॉज अ डिजीज कॉल्ड एथलीट्स फूड। ओहो, एथलीट्स फूड कैसे होता है? फंगस के कारण। एथलीट्स एथलीट्स फूड फंगस होता है, फंगस फंगस डिजीज। एथलीट्स फूड फंगस, फंगस कैसे होता है? एथलीट्स एथलीट्स फूड फंगस होता है, फंगस होता है। एथलीट्स फूड फंगस से होता है, फंगस। एथलीट्स फूड फंगस से होता है। एथलीट्स फूड फंगस से होता है। और क्या है? पॉलिस, हाँ नहीं नहीं नहीं, ये पढ़ा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो इन ह्यूमन बॉडी। रेडियो सोडियम 24, रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड का फ्लो होता है उसके स्पीड को मेजर करने के लिए जो हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज करते हैं उसका नाम क्या है? रेडियो सोडियम 24, रेडियो सोडियम 24, रेडियो सोडियम 24। हमारा बॉडी में जो ब्लड का फ्लो है उसके स्पीड को मेजर करने के लिए जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेडियो सोडियम, रेडियो सोडियम 24। द मेजरमेंट ऑफ blood flow, speed of blood flow in human body by radioactive element is known as radiosodium 24. Next. Which disease is likely due to the consumption of polished rice, polish rich rice, berry berry, berry berry, berry berry, likely due to the consumption of polish rich rice. Consumption, consumption of polish rich rice, berry berry, berry berry, consumption of consumption of polish rich rice, berry berry, berry berry. Rich rice, berry berry, polish rich rice, berry berry होता है। Yeah, who is the carrier organ
organisms of Plasmodium parasite mosquito. Who is the carrier organisms of Plasmodium parasite mosquito? Due to harmful radiation, the brain is affected the least and the eye is the most affected out of all the organs of human body. Yes. Due to the harmful radiation, the brain of affected the least and the eye is the most affected out of all the organ of human body. What is the full form of MRI? Magnetic resonance imaging. Imaging. Yes. MRI, full form of MRI. It's a magnetic resonance imaging, whatever. MRI, magnetic resonance imaging. Full form of MRI, magnetic resonance imaging. Next क्या BMD test is done to identify what? Osteoporosis. BMD test किसके लिए होता है? Osteoporosis के लिए. BMD test. Osteoporosis. BMD test. Osteoporosis. BMD test होता है osteoporosis. BMD test. Osteoporosis. BMD test. Osteoporosis. BMD test. BMD test. Osteoporosis. BMD test होता है osteoporosis. और क्या? Which mosquito is carrier? Zika virus. Aedes aegypti. Zika virus. Aegypti. Aedes aegypti. Brain. Which test helps in recognizing brain disease? EEG. Encephalograph. Which test helps in recognizing brain disease?
राइनो वायरस कॉमन कोल्ड क्या होता है? राइनो वायरस होता है। राइनो वायरस के द्वारा कॉमन कोल्ड होता है राइनो वायरस राइनो वायरस कॉमन कोल्ड राइनो वायरस राइनो वायरस common cold rhinovirus okay, the disease called anosmia related to what? Lack of smelling power. Anosmia, smelling power or lack of olfactory sensation. Sulfur medicine are useful in the treatment of bacterial infections. Sulfur medicines are useful in anosmia related to lack of smelling power. The disease called anosmia related to what? The lack of smelling power. Lack of smelling power. Disease anosmia. So that is lack of smelling power. Lack of smelling power. Disease anosmia. Lack of smelling power. सल्फा मेडिसिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होता है. सल्फा मेडिसिन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में यूज होता है. ट्रीटमेंट के लिए सल्फा मेडिसिन का यूज बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट किया जाता है. बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है. डीपीटी वैक्सीन डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस. डीपीटी वैक्सीन किस लिए होता है? डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और टेटनस. डीपीटी वैक्सीन का यूज डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस काली खांसी पर्ट्यूसिस और दूसरा टेटनस. डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और टेटनस के लिए. DPT vaccine used to protect against wheezing, diphtheria, pertussis, and tetanus. Heartbeat is controlled by which element? Potassium. Heartbeat controlled by which element? Controlled by which element? So potassium. Heartbeat controlled by which element? Potassium. Heartbeat controlled by which element? Potassium. Okay.
प्लेग इन्फेक्टेड रैट के काटने से क्या होता है? प्लेग होता है. After which period virus replicates in the body and starts to affect the host. Incubation period. Incubation period. After which period virus replicates in the body and start to affect the host. Incubation period. Lymphatic filariasis disease is caused by roundworm. Lymphatic filariasis disease is caused by roundworm. Which disease is caused by due to HIV/AIDS? HIV किससे होता है? AIDS. Human. Human. Which causes a genetic disorder called Down syndrome due to change in the number of chromosomes. Down syndrome due to the change in the number of chromosomes. Measles disease cannot be cured by antibiotics. Measles disease. Measles disease. No. Measles you cannot be cured by antibiotics. Measles disease. Measles disease cannot be cured by antibiotics. Antibiotics. Measles disease cannot be cured by antibiotics. Antibiotics. What are the two major fungal diseases that cannot be black rust and small? That can occur with give black rust or small. Black rust or small fungal disease that occur with occur करता है. What are the two major fungal disease that occur in wheat? Black rust and small. Fungal disease occur in wheat. Black rust and small. Black rust and small.
disease. Yellow vein disease in lady finger. In lady finger. White fly. White fly. Yellow vein disease. Yellow vein disease in yellow vein disease in lady finger. Lady finger. White fly. White fly. Yellow vein disease. Yellow vein disease in lady finger. White fly. White fly. Padilla. Pyrella is a pest found in which crop? In which crop? Sugarcane. Sugarcane. Pyrella is a pest found in which crop? Sugarcane. Sugarcane. What causes the white rust is the disease related to which crop? Mustard. White rust is disease and mustard mustard. Mustard mustard. White रस्ट क्या है? डिजीज है। कहाँ होता है? मस्टर्ड में होता है। ओके, डाइट डिजीज होता है किडनी। एलिसा टेस्ट एड्स के लिए होता है। ये रही इसमें टेस्ट एड्स के लिए होता है। एड्स एलिसा टेस्ट एड्स के लिए होता है। एड्स के लिए होता है। एड्स ये टेस्ट एड्स के लिए होता है। ये आईएस का टेस्ट एड्स के लिए होता है। एड्स के लिए प्रोटीन पाया जाता है। What galley insulin is used to control what cancer? Cancer. Interferon. Interferon इस कैंसर को कंट्रोल के लिए होता है। इंटरफेरॉन। सिलिकोसिस डिजीज रिलेटेड टू लंग्स। सिलिकोसिस डिजीज related to lungs. Silicosis disease related to lungs. Silicosis related to lungs. Silicosis related to lungs. Silicosis disease. Silicosis disease related to lungs. Silicosis disease related to lungs.
related to lungs, related to lungs.